Every year on October 2nd, we celebrate Gandhi Jayanti to mark the birthday of Mahatma Gandhi and his selfless contribution for India's freedom struggle. A simple, warm wish on his birthday can bring back the spirit of independent India. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़ी जोर की, दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। Gandhiji was born on October 2nd, 1869 in Porabandar at Gujarat. 2nd October is celebrated in the honor of birthday of the father of nation Mohandas Karamchand Gandhi. He played very significant role in the achieving of independence for India from British rule. He was born to Karamchand Gandhi and Putali Bai with 4 other siblings. Putali Bai was very religious lady. Mohandas Karamchand Gandhi studied in Samaldas College in Bhavnagar state. In May 1883, Mohandas Gandhi was married to Kasturabai at the age of 13. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। Even after his marriage, Gandhiji continued his schooling and studies. For his higher studies, Gandhiji on 4th September 1888 left Porabandar and sailed to London from Bombay. There in London, Gandhiji attended University College of London. There he studied law and became a barrister. Then Mohandas Karamchand Gandhi moved to South Africa to be a lawyer.
He spent 21 years in South Africa, where he developed his political views and politics. Remembering Mahatma Gandhi is like remembering a phenomenon, pure and simple. To the vast multitude of Indians, he was a Mahatma who came to uplift Indians from the morass of despair and degradation, and who fought the British Raj not with the power of muscles but with his spirit. Truth and non-violence were his watchwords. The only way to purge the world of will was to overcome anger by love, untruth by truth, and himsa by ahimsa. He taught us to be change we wish to be see in the world. He taught us that where there is a love, there is a life. He followed the path of ahimsa and non-violence to make us unite. He is our father of nation. Let's salute the father of nation, the great soul who contributed country's freedom. Upon arriving in South Africa, he faced discrimination because of his skin color and was told to sit on the floor. Then he was beaten and thrown out when he was refused to do so. All these years in India, the British rule was going on deepening and had control on maximum parts of India. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्. In 1915, Gandhiji, after gaining much popularity in South Africa and playing an important role in Black South African right to vote, returned back to his home country, India. Since the birth of Gandhiji in 1869, India was firmly under the British rule. After coming back to India, he was introduced to Indian issues, politics, and Indian people. Gandhiji took leadership of the Congress in year 1920 and began escalating demands until on 26th of January 1930, the Indian National Congress then called for the independence of India. Gandhiji moved all over the country in train and started gathering people and addressing them regarding Indian independence. ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಪಾಶವಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಇದರ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವರು ಗಾಂಧೀಜಿ.
ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಐಕ್ಯ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಚಾರ, ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಇವು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರಿಸಿದ ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಚರಕ ಇವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಂಕೇತಗಳಾದವು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಲೆ ಜಾವ್ ಎಂದರು. 1942ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೊನೆಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. Swadeshi movement conducted by Gandhiji for boycotting foreign goods and started weaving clothes with his charaka, and many people all over India surrendered Swadeshi movement. On March 12th to 6th April, Gandhiji with total 78 other volunteers marched 388 kilometers from Ahmedabad to Dandi, Gujarat to make salt himself, violating the salt laws. Gandhiji declared in India with the cooperation of Indians, British has survived in India. If Indians refuse to cooperate, British rule would collapse and Swaraj would come, which in turn lead to protest all across India. People across India gathered in crowds, and on April 9th, Gandhiji was arrested for violating rules. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वह रे फकीर खूब कराम
British war effort and he campaigned against any Indian participation in the World War II. के दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल मजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज भी लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। Because of continuous efforts of Gandhiji and all other freedom fighters, we finally breathed the fresh air of freedom and independence on 15th August 1947. After the freedom, the India faced a very unfortunate incident. The father of nation, Gandhiji, was shot dead by Nathuram Godse on 30th January 1948. World mourned the loss of the legend and a Mahatma.